Assalamu alaikum class, hope you are all good. आज हम अपने मोहर सर्कल 2D डायमेंशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं थ्री डायमेंशन में। उसको देखेंगे कि वो किस तरह हम एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 डायमेंशन में आपको याद होगा कि हम प्लेन स्ट्रेस केस की बात की थी कि प्लेन स्ट्रेस केस में बेसिकली एक प्लेन के अंदर सिर्फ स्ट्रेस होती है या अपीयर होती है। थर्ड डायमेंशन में वो मटेरियल ना होने की वजह से या जो फोर्सेस की एप्लीकेशंस हैं उनकी ओरिएंटेशन इस तरह की है कि थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेस या तो जनरेट ही नहीं होती या इतनी होती है जो नेग्लिजिबल होती है एज़ कंपेयर टू दूसरे एक्सिस के। तो वो प्लेन स्ट्रेस केसेस होते हैं। तो प्लेन स्ट्रेस केसेस को आमतौर पे हम 2 डायमेंशन में ही डील करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस में क्या वेरिएशंस हो रही हैं, किस तरह नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम और मैक्सिमम पे जाती हैं जिन्हें हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। इसी तरह शेयर स्ट्रेसेस कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होती हैं, ये सारी डिटेल्स हम करते रहे हैं। अभी हम सिर्फ जो 2 डायमेंशन की में हमने किया था यानी कि प्लेन स्ट्रेस केस में उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और साथ ही उसी चीज़ को फ़ौरन हम 3 डायमेंशन में किस तरह एक्सटेंड होगा उसको देखेंगे। तो कुछ सपोर्टिव वीडियोस मेरे पास हैं, वो उसको हम स्टार्ट करते हैं और उसमें वक्तन फ़वक्तन हम उसमें एडिशन करते रहेंगे। मतलब जहाँ मुझे ज़रूरी लगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा साथ आप। तो हम ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। Unit 8.2, Mohr's. In this unit, we've been focused on the following course outcome. Demonstrate the ability to transform stress and strain and find principal, normal, and shear stresses. In the previous lesson, we used equations for transforming normal and shear stresses and equations to find the principal stresses and maximum in-plane shear stresses. In this lesson, we will focus on using Mohr's circle to do the same thing, to transform stress and find principal normal stresses and maximum in-plane shear stresses. A second outcome will be to calculate the absolute maximum shear stress. As an introduction to Mohr's circle, let's first discuss the equations that we used in the previous lesson. We had an equation to calculate principal stresses, given some initial stress state consisting of sigma x, sigma y, and tau xy. We also used this equation here to calculate the maximum in-plane shear stress, given the same input stresses. These equations here were used to calculate angles of rotation to reach the principal stresses or maximum in-plane shear stress. And this equation here was used to find the normal stress at an angle of maximum in-plane shear stress. You may have noticed some similarities between the equations. First of all, the second term in the principal stress equation is equal to the maximum in-plane shear stress equation. The first term of the principal stress equation is equal to the equation for average normal stress. And the equations for finding the angles theta p and theta s are just the inverse of one another with a negative sign on theta s. We're going to use these similarities in a graphical approach to finding the principal stresses and maximum in-plane shear stresses and rotation angles. And this graphical approach is called Mohr's circle. What we're going to be doing is drawing a circle on a coordinate system. And the points on the circle will represent the stresses on an element. So we always begin with a stress element with known stresses sigma x, sigma y, and tau xy, all shown here in the positive sense. We will draw a coordinate system as shown, with the horizontal axis representing our normal stress, sigma. The vertical axis will represent our shear stress, tau. And note one unusual thing about these axes is that the positive tau direction is shown down. We'll explain why a little later. The first step is to find the center of what will be our Mohr's circle for plane stress. And that's going to be equal to our average stress equation. We will take the average of sigma x and sigma y from our stress element, and we will plot that
on the sigma line, which means tau will be equal to 0. So the center of our circle is simply the average of sigma x and sigma y. The next step is to plot a point on our coordinate system that represents the x face of our element. It has coordinates of sigma and tau. So we will plot sigma x and tau xy. Now, if one of these is negative, and they both can be negative, then we'll plot in a different quadrant. I'm assuming for this introduction discussion that they are both positive, so they will plot here in this quadrant. The next step is to plot the y face of our element, and we will plot as coordinates sigma y and negative tau xy. And I'll assume those are both positive, sigma y and tau xy, so that will plot up here. And notice that this point, which represents the y face, is directly across our center point from our x face coordinate. And these 2 points will lie on the circle, and they are exactly 180 degrees apart. So I can connect the x face and the y face with a straight line as shown. Now, because I'm going to draw a circle, I want to find the radius, and the radius will be the distance from the center point to either one of these 2 points. And I can find the radius by drawing in a right triangle as shown, and I know the lengths of the 2 sides. The long side has a length of tau xy. The length of the short side is half the distance between sigma x and sigma y, so it's sigma x minus sigma y divided by 2. And therefore we can get the radius as the square root of the sum of the squares of the sides, and that is shown here. And knowing the radius, I can draw my complete circle. At the point where the circle crosses the sigma axis, I get the maximum and minimum values for sigma. These are the principal stresses, and I've labeled them as sigma 1 and sigma 2. And they can be calculated as the center of the circle plus the radius, or the center of the circle minus the radius. And that's exactly what the equation for principal stresses does. The first term is the center of the circle. The second term is the radius. At the point where the circle reaches a vertical maximum, we find our maximum in-plane shear stress, and its value is equal to the radius of the circle. Another important thing to note is that, as previously mentioned, these 2 points that we first plotted on our circle represent this element. If we were to rotate this element, those 2 points would rotate around the circle about the center. And the stresses on the x and y face will always lie on this circle and be exactly 180 degrees apart. If we rotate the element in a counterclockwise direction, we'll eventually reach the principal stresses. If we rotate the element in a clockwise direction, we will eventually reach the maximum in-plane shear stress. We can use Mohr's circle to find the angle of rotation. If we take this element, which is represented by this line, and rotate it through this angle 2 theta p, the element will be in the principal stress state. I showed this angle as 2 theta p because the angle on Mohr's circle is double the actual angle I will have to rotate the stress element. For example, you notice that the x face and y face points on the circle represent this element, but the x and y faces are only 90 degrees apart. On the circle, they're 180 degrees apart. So any angle that we calculate using Mohr's circle, we have to divide by 2 to get what the actual rotation angle is in reality. I suppose the good news is that the direction of rotation on Mohr's circle, either in the clockwise or counterclockwise direction, matches the direction of rotation on the actual element. Now, if we had plotted positive tau pointing upward, then the rotation direction on Mohr's circle would be opposite the rotation direction of the actual element. And that is the reason why we plot tau as positive going down. Now we can find the angle 2 theta p by using the same right triangle we used before, and we can find the angle 2 theta p by taking the tangent inverse of the long side tau xy divided by the short side, shown by this term. Here's the equation that we used before. We can also find the angle that we need to rotate the element to reach our maximum in-plane shear stress, and similarly we can find that angle using a right triangle
And here's the expression. Now to summarize what we've covered. When given a stress element, we now have two options for finding the principal stresses and maximum in-plane shear stresses and their rotation directions. We can either use the direct equations or we can use Mohr's circle. Let's now turn our attention to finding the absolute maximum shear stress at a point in a structure. And let's start with an example. Assume we have a pressure vessel. Inside is a pressure of 200 psi. It has a wall thickness of 0.1 inches and a radius of 25 inches. With those, we can find the hoop stress and axial stress in the vessel wall. Here's the stress element that represents the vessel wall when the coordinate system is aligned with the axial direction and circumferential direction. If we took this element and used it to plot Mohr's circle, the circle would look like this. Here, on the x-face, we have a normal stress of 25 ksi and a shear stress of 0. So we would plot the x-face here, and we would take the y-face, which is 50 ksi, and the negative shear stress, but that's just 0. So we'll plot it at 50, sigma is 50, and tau is 0. And if we draw our circle, it would look like this. And we notice that sigma 1 and sigma 2, the hoop stress and axial stress, are the principal stresses. In fact, that's the reason they are given the variable names sigma 1 and sigma 2, because they are the principal stresses. And that is why there's no shear stress in this plane. The maximum in-plane shear stress is equal to the radius of the circle, which is 12.5 ksi. However, this maximum in-plane shear stress is not the absolute maximum shear stress in the vessel wall. Let's look at this a little more closely. I've drawn the element as a plane stress element. If we consider that it is really a volume element, and there's also a z-axis as shown. When I plotted Mohr's circle, I was plotting Mohr's circle for the xy plane. But now let's consider a different plane. If we consider the xz plane, then the stresses in that plane are 20. इस वक्त जो हमने पहले प्लॉट किया था वो बेसिकली x और y प्लेन का किया था. थर्ड एक्सिस में हमने ज़ीरो ली थी. जो नॉर्मल स्ट्रेस है ना, वहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है. ठीक है, z एक्सिस में. तो उसको हमने निगलेक्ट किया था. तो हमने 25 जो x की डायरेक्शन में KSI है और 50 KSI जो कि y की डायरेक्शन में है, इनको कंसीडर करते हुए हमने एक मोहर सर्कल ड्रॉ किया था जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेस 50 KSI और मिनिमम स्ट्रेस 25 KSI था. ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम x और z प्लेन की बात करें, ये वाली, अगर इसका मोहर सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो x डायरेक्शन में 25 है और z डायरेक्शन में 0 है. ठीक है, मिनिमम 0 पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लें और मैक्सिमम x डायरेक्शन में 25 के ऐसे यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लें तो इसका एक मोहर सर्कल बनेगा. ठीक है, इसके बाद एक तीसरा भी सर्कल बना सकते हैं. अगर हम z y डायरेक्शन का मोहर सर्कल बनाने की कोशिश करें, y डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो 50 KSI है मैक्सिमम और z डायरेक्शन में 0 है, 0 और 50. अब इसका हम एक और बड़ा सा सर्कल ऐसे बना सकते हैं. 25 KSI and 0 in the z direction. And if we plot Mohr's circle, it would look like where there are still one more y have 50 KSI in the y direction and 0 in the z direction. If I draw Mohr's circle for that, it will look like this. It circumscribes both circles. And if I was to calculate the maximum shear stress in this plane, it would be here. And here we see that the maximum stress is greater than the in-plane shear stress for the xy plane. So here are some equations. When the principal stresses, sigma 1 and sigma 2, have the same sign, that is, they are both positive or they are both negative, then the absolute maximum shear stress is equal to sigma 1 divided by 2.
When sigma 1 and sigma 2 have opposite signs, that means when sigma 1 is positive and sigma 2 is negative, then the absolute maximum shear stress will be equal to sigma 1 minus sigma 2 divided by 2. Going back to our example, because sigma 1 and sigma 2 were both positive, the absolute maximum shear stress is simply sigma 1 divided by 2. That's 50 ksi divided by 2, or 25 ksi. That's this point right here. You can see the large circle has a diameter of 50 ksi. That means the radius is. ये मोहर सर्कल 3 डायमेंशन के लिए shear स्ट्रेस निकालने का तरीका है कि अगर वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं तो क्या यूज़ करना है। अगर सिग्मा 1 या और सिग्मा 2 में से दोनों ऑपोजिट हैं तो कौन सा रिलेशन फिजिबल रहेगा। Have that 25 ksi. In a different example, say we had, instead of tension in the x direction, but a compression stress, then our principal stresses would be sigma 1 is 50 ksi, sigma 2 is negative 25 ksi. They have different signs. So we would use this equation for absolute maximum shear stress, sigma 1 minus sigma 2 over 2. That would give us a value of 37.5 ksi. And we're done. In this video, we're going to take a look at stress transformation in Mohr's circle. ये इसी तरह जैसा अभी मोहर सर्कल 3 डायमेंशन में हमने देखा है, ये एक और ये छोटी सी एक क्लिप है, इसमें भी 3 डायमेंशन किस तरह हम देख सकते हैं मोहर सर्कल के ऊपर। तो इसको ज़रा देखते हैं और इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। Start by reminding ourselves about the stress element. The stress element is a useful way of describing the stresses acting at a single point within a body. In this video, we will consider a 2D stress element corresponding to a state of plane stress. The normal stresses and shear stresses are shown on the 4 faces of the element. Let's look at a simple example of a beam under axial load. Our stress element is aligned with the direction of the applied load, and so the stress state will be very simple. We will only have a normal stress of sigma x, sigma y, and the shear stresses will be 0. But we might want to rotate our stress element to get the stress state for a specific angle. If there was a weld in our structure, for example, we might want to determine the stresses perpendicular to the weld. Depending on how we choose to orient our stress element, we will get different values for the normal and shear stress components. We can calculate what the normal and shear stresses will be as we rotate our stress element by using the stress transformation equations. The inputs to these equations are the normal and shear stresses at the starting orientation of our stress element, and theta, the angle through which we are rotating the element. Theta is positive for counterclockwise rotation. Let's look at an example of stress transformation for the stress state described by the stress element shown here. As we rotate the stress element, the normal and shear stress components will vary. Once we have rotated the stress element by 180 degrees, we will return to the configuration we started with. It is important to remember that the actual stress state within the large body is not changing when we rotate our stress element. We are just rotating the axes of the coordinate system we are using to visualize the stresses at a single location. इसमें भी बेसिकली यही बताया गया है कि किस तरह इसकी एलिमेंट की रोटेशन के साथ साथ ये नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस की वैल्यूज़ चेंज होती है। नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया गया है और shear स्ट्रेस ये नीचे वाली ब्लू लाइन में दिखाया गया। ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी वैल्यूज़, मतलब shear स्ट्रेस 10 वैल्यू से, जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाई गई है, और इसी तरह सिग्मा एक्स की वैल्यू 20 यूनिट्स पे स्टार्ट हुई थी, तो वो चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, तो ये टॉ एक्स वाई और सिग्मा एक्स की वैल्यूज़ को आपस में वो दिखाया जा रहा है। तो इसको आप
हम देखें तो हमें याद होगा कि मोहर सर्कल में जिस वक्त नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती थी उस वक्त शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो हो जाती थी। तो ये जिस वक्त ये मैक्सिमम पे जाएगी अपनी नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये इस वक्त शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो पर आ जाएगी। और शियर स्ट्रेस की वैल्यू जिस वक्त मैक्सिमम पे होती थी, ठीक है, तो उस वक्त नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू एवरेज पर आ जाती थी। जिस वक्त शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम पे आती है ना, ये बॉटम साइड पे मैक्सिमम या टॉप साइड पे मैक्सिमम, ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर मैक्सिमम आती है तो भी इसकी वैल्यू एवरेज पर आ रही है, ठीक है, इस साइनोसाइडल ऊपर वाली साइनोसाइडल की एवरेज वैल्यू। इसी तरह ये जब टॉप पे आ तब भी ये इसी अपनी एवरेज वैल्यू पर ही आ रही है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू एवरेज ही होती है। ये वही ट्रेंड है जो हम मोहर सर्कल में देखते रहे हैं। We can observe that for certain angles, the normal stress will reach maximum and minimum values, and that these maximum and minimum values are separated by an angle of 90 degrees. This means that when we rotate our stress element such that we have the maximum normal stress on the x face of our element, we always have the minimum normal stress on the y face. Another interesting observation is that when the normal stresses are at their maximum or minimum values, the shear stresses are zero. These faces on which the shear stresses are zero are called the principal planes, and the corresponding maximum or minimum normal stresses acting on these planes are known as the principal stresses. Principal stresses are very important, so let's recap. They are the maximum and minimum normal stresses acting on our stress element. They always occur when the stress element is rotated such that the shear stresses are zero, as shown here. We denote the maximum and minimum principal stresses using the symbols sigma 1 and sigma 2 respectively. The rotation angle which gives us the principal stresses is denoted using the symbol theta p. Because it is the maximum normal stress at the location of our stress element, being able to calculate sigma 1 can be important for predicting failure. Mohr's circle is a graphical method for easily determining the normal and shear stresses for different orientations of our stress element, without having to use the stress transformation equations. Let's see how Mohr's circle is constructed. First, let's draw the horizontal and vertical axes. Normal stress is on the horizontal axis, and shear stress is on the vertical axis. We will plot positive shear stresses in the downwards direction. Next, we plot the stress conditions corresponding to the x face of our stress element by plotting a point with coordinates sigma x, tau xy. Then we plot a point corresponding to the stress conditions on the y face by plotting a point with coordinates sigma y, negative tau xy. The sign convention we use for Mohr's circle is that shear stresses are positive if they tend to rotate the stress element counterclockwise, and are negative if they tend to rotate it clockwise. This is why tau xy is negative on the y face of our element when we draw Mohr's circle. Normal stresses are positive if they are tensile, and negative if they are compressive. The line between these 2 points defines the diameter of our Mohr's circle, which we can now draw. Each point on the circle represents the normal and shear stresses for a certain orientation of our stress element. We can use Mohr's circle to work out some interesting information. We can see visually that the maximum shear stress is equal to the radius of the circle, which we can easily determine, either approximately by measuring the distance on paper, or exactly by using the equation for the radius of a circle. We can also determine the principal stresses by looking at where the circle crosses the horizontal axis, as the shear stress is zero at these locations. The principal stresses can be calculated by taking the x-coordinate of the center of the circle and adding or subtracting the circle radius. We can also use trigonometry to calculate angles on Mohr's circle. For example, we can calculate the angle theta p between our original stress element and the principal planes. An important thing to note is that angles in Mohr's circle are doubled compared to the angle we rotate our stress element by. This is apparent by observing that in Mohr's circle there is a 180-degree angle between the minimum and maximum principal stresses, whereas on our stress element, the angle is 90 degrees. This is why we use the 2 times theta notation on Mohr's circle. Theta is the angle we rotate our stress element by, and 2 times theta is the corresponding angle on Mohr's circle. So far, we have only looked at a 2-dimensional case, but we can extend what we have learned to 3 dimensions.
a three-dimensional stress element looks like this. In 3 dimensions, we have 3 principal stresses, which by convention are numbered from largest to smallest. Mohr's circle in 3 dimensions is made up of 3 different circles, drawn as shown here. ये वही सर्कल्स हैं, मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से एक्स वाई के अकॉर्डिंग हमने बनाया था, ड्रॉ किया है। तो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 बेसिकली एक्स और जी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। ये उनके रेफरेंस से उस प्लेन पे बना हुआ है। इसी तरह सिग्मा वाई और सिग्मा जी प्लेन के ऊपर जो बनाया गया था वो सिग्मा 3 और सिग्मा 1 पे आता है, ठीक है। तो y और z पे बनाएंगे तो ये बड़े वाला सर्कल हमारा बनता है, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पे हमने ये लास्ट में भी बात की है, आगे भी बात की है, अभी फिर फर्दर और भी कंटिन्यू करते हैं इसे। All possible combinations of normal and shear stresses for our 3D stress element lie on the boundary of or within this shaded area. Now that we have learned about how to find stress elements in 2 dimensions, we need to apply the same lessons in 3 dimensions. When we did Mohr circle in 2D, we found principal stresses and maximum shear stresses in that plane. Now we're going to do the same thing, but to take account all 3 planes. This is usually done after all other calculations. In 3D, we treat the elements as cubes. The absolute shear stress is sigma 1 minus sigma 3 divided by 2. We will talk about what each one is, but basically this is saying that you will take the largest principal stress and the smallest and treat them as sigma 1 and sigma 3 respectively. Here is an example of a 3D stress element. Seeing it this way may seem confusing, but some important things to note are some of the directions of each arrow, and if it is perpendicular to a face or parallel with it. Then it is of course good to know what the faces are acting on. If it's a normal stress, it will be perpendicular to the same face that it is acting on. If it is shear, it will be parallel to the 2 faces at the same time, but be going in opposite directions. Now what we want to do is draw a 2D element to represent each face. First we will start with the X face, meaning when we are staring at the X face, what will we see? We will see a tensile stress on the Z face and a tensile stress on the Y face. The shear stress that is present on this cube will not appear in this orientation. Next, we will look at the Z face. Take a moment and try and visualize what it should look like. Is this what you imagined? You should notice how the X and Y face stresses appear, but none of the Z forces. Finally, we will look at the Y face. Here we see X and Z stresses, as well as shear X and Z stresses acting on the plane. Now we simply run through the calculations that we derived in 2D. इसमें अभी तक यही बताया कि एक 3 डायमेंशन में अगर हमारे पास क्यूब है और उसकी x, y, z कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो उसको अगर x फेस से देखा जाए, x साइड से अगर उसको देखा जाए तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। इसकी x साइड से अगर देखा जाए तो राइट साइड पे 10 के psi वो फोर्स नज़र आएगी, ठीक है। और इसी तरह वर्टिकल पे 15 के psi फोर्स नज़र आएगी, ठीक है। राइट साइड पे 10 के psi और वर्टिकल पे 15 के psi, ठीक है। ये एक्स फेस से नज़र आएगा। इसी तरह अगर जी फेस से देखें, यानी कि टॉप से अगर देखा जाए तो अगर ये टॉप से देखें तो हमें ये 20 के, मतलब फॉर एग्जांपल आप ये जी फेस है ना, जी फेस को उसको टॉप से देखें तो हमें ये राइट साइड पे एक 20 के psi एक ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। और इसी तरह वर्टिकल जो है वो 10 के psi नज़र आएगी इस ऐसे, तो ये 10 के psi ये नज़र आएगी अगर हम टॉप से देखें तो, ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है। इसी तरह वाई फेस, वाई डायरेक्शन ये वाली है, यानी कि यहाँ से देखा जाए, ठीक है। यहाँ से देखा जाएगा तो राइट साइड पे 20 के psi नज़र आएगा, ठीक है। और टॉप पे 15 के psi नज़र आएगा, ठीक है।
और हमें साथ एक shear फोर्स ये भी राइट पे नज़र आएगी वर्टिकली, और टॉप पे इस तरफ यानी कि इस एज पे इकट्ठी होती हुई नज़र आएगी, जिसको आप टॉ एक्स जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 kPSI हमें ये जो है shear स्ट्रेस एक वो भी नज़र आएगी। ठीक है, ऐसे तो ये हिडन फेसिस पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऑब्वियसली इनको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड पर भी एक shear स्ट्रेस है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे एक shear स्ट्रेस लग रही है या जनरेट हो रही है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये हमें फेसेस सारे क्लियर कंप्लीट होते हैं। और पहले हम सिर्फ एक फेस को लेकर तो मोहर सर्कल ड्रा करते थे, अब हर फेस का मोहर सर्कल अलग से ड्रा किया जाता है। ठीक है, तो फिर वो 3 डायमेंशन में जो है वो मोहर सर्कल हमें मिलता है। To find the principal stresses, we need to use the equation here. First, we will work with the x-face. Using the numbers provided on the x-face, we will find our principal stresses to be 15 and 10 for this plane. Now we will repeat for the z-face, and we get 10 and negative 20. And finally for the y-face, and we get 15.7 and negative 20.7. Don't forget that you need to include the shear stress in this calculation. Taking what we derived in the last slide, we will now draw 3D Mohr circle and find the absolute maximum shear stress. The absolute max shear stress is where you will take the largest principal stress and the smallest and subtract them and divide it by 2. You should get 18.2. Now we can draw Mohr circle. First we will draw the x face, next the z face, and then finally the y face. This one turned out nice and easy because it just so happened that the maximum principal stresses were found on the y face. And that means that they are the absolute maximum stresses that you will find. So this 3D Mohr circle that envelops sigma 1 and sigma 2, if they were found on different respective faces, they would be in a circle that goes from the new sigma 1 and the new sigma 2. Then the absolute maximum shear stress would be found at this point here. तो ये इसी तरह एक्स फेस, जी फेस और वाई फेस तीनों के सर्कल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और फिर उनके एब्सोल्यूट मैक्सिमम shear स्ट्रेस की वैल्यू उसको भी फाइंड आउट किया गया, जो कि ऑब्वियसली बड़े सर्कल की बनेगी। ठीक है, तो इसी तरह इसको कंप्यूट किया जाता है कि छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम आता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि किस तरह आपने तीनों सर्कल्स ड्रा करने हैं और इनसे इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ किस तरह आपने निकालनी है। सेम वही मेथड है जो कि 2 डायमेंशन वाले केस में है। ठीक है, और इसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं, सिवाय इसके कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम shear स्ट्रेस जो आपने निकालनी है, मैक्सिमम shear स्ट्रेस वो ऑब्वियसली सबसे बड़े सर्कल की बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 रिलेशंस बताए थे। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा भी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो तो क्या रिलेशन लगाना है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर क्या रिलेशन लगाना है। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर हुई है आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं जल्दी शेयर कर दूंगा अभी आपके साथ। तो उसमें एक डिटेल एग्जांपल जो मोहर सर्कल 3D की है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो होपफुली वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह गाइड करेगी, वो क्लियर हो जाएगी सारी चीज़। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट मोहर सर्कल 2D को रिवाइज़ करें और 3D के ये 1-2 लेक्चर देख लें और एग्जांपल देखेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर इसको हम अपने जो एक प्रॉब्लम जनरल है जो कि अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, एक छोटी सी असाइनमेंट प्रॉब्लम के तौर पे, ठीक है, उसमें इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा हमें जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि जिस तरह हम सेशनल 1 से पहले हमने एक ग्रुप बनाए थे कि 3 स्टूडेंट्स मिलकर अपना सेमेस्टर प्रोजेक्ट एक करेंगे, ठीक है, तो उसी तरह का एक प्रोजेक्ट, डिज़ाइन प्रोजेक्ट, जिसमें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की कैलकुलेशंस और वो स्टडी जो है ना वो इन्वॉल्व होती हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल टॉयंस की थीरीज बीच में आती हैं, मोहर सर्कल की कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी तरह बेंडिंग कहीं पर आ रही है, कहीं पे फटीग आ रही है, कहीं पे क्रीप आ रही है, इस तरह की चीज़ें, मतलब कोई ऐसा
आप सब लोग क्वारंटीन में हैं और घरों में हैं, तो अपने अपने घर के अंदर कोई ऐसा लोडिंग कंपोनेंट देखें, कोई ऐसी मतलब कोई कोई ऐसी एग्जांपल देखें जिसमें मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हों और चीज़ के फेल होने का चांस हो सकता है आपके नज़दीक, चाहे वो फेल नहीं हो रही। ठीक है, कोई भी ऐसी आप एग्जांपल वो मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, तो जिसके अंदर मल्टीपल थीरीज हमने जो कुछ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 और 2 में पढ़ा है, उसकी 2-3 फील्ड्स इन्वॉल्व होती हों उसकी डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो वो आप मेरे साथ शेयर करें और उसमें मुझे खुद प्रपोजल दें कि आप क्या कर सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और कैसे करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सिर्फ मुझे आप पिक्चर उस चीज़ की अपने घर के अंदर प्रोजेक्ट की पिक्चर उतारें। ठीक है, वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करें, साथ एक हैंड रिटन एक पेज के ऊपर ना हाफ पेज का जस्ट 5 से 7 लाइंस में। ठीक है, आप ब्रीफ करें कि आप वो प्रॉब्लम की, यानी कि उसको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको डिफ़ाइन करें कि मैं इसको मतलब कोई भी ऐसी ब्रैकेट है या कोई बीम है या कोई भी लोडिंग मेंबर है, मैं इसको रीडिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रीडिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। अभी इसके ऊपर करंटली इतनी फोर्सेस लग रही हैं, इतना वेट है, और मतलब जो भी चीज़ उसके ऊपर लग रही है उसका इतना वेट है और वहाँ से इतनी फोर्स निकलती है, और इसकी डायमेंशंस ये हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है। ठीक है, सारी डायमेंशंस आपके पास हैं, आप उसको निकाल सकते हैं, उसका स्केच बना के 3 डायमेंशन में आप चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेसेस कितनी है और इसका मटेरियल ये है, तो आया कि ये सेफ़ होगी या नहीं, इसके अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेसेस को किस तरह निकाला जा सकता है। बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वो कैसे निकाल सकते हैं, उसमें एक जनरल सा प्रॉब्लम आप बना के अपने अपने घरों में से। ठीक है, वो मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके हर क्वेश्चन को और रिफ़ाइन करूँगा। मैं आपको खुद टास्क मतलब आपने जो किया होगा ना, उसमें अगर एडिटिंग की ज़रूरत हुई तो मैं एडिटिंग करके आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी ये वाली असाइनमेंट है, आपने इसमें ये चेंजिंग करके ये काम मुझे करके दें। ठीक है, तो वो एक जनरल असाइनमेंट या छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट सा आपका काउंट होगा, जिसके हम जो है ना कुछ मार्क्स भी रखेंगे। ठीक है, अच्छे खासे, और एक साथ हमारा ओवरऑल वाइवा इस छोटे से प्रोजेक्ट में से, और जितना कुछ हमने कवर किया कोर्स उसमें से एक वाइवा हुआ करेगा। ठीक है, जो कि श्योरली वो 10-15 मिनट एक स्टूडेंट पे लगेंगे, तो एक अच्छा कंसिडरेबल वाइवा होगा। फाइनल की परसेंटेज उसमें अच्छी खासी काउंट होगी। ठीक है, तो फाइनल की परसेंटेज अच्छी खासी उसमें काउंट होगी, तो उस लिहाज से आपने सही से तैयारी करनी है, इसको लूज़ नहीं लेना। तो आप आज से सोचना शुरू करें और कोशिश करें एक या इस वीकेंड पे, मतलब जुम्मा, हाँ, फ्राइडे नाइट से पहले पहले मुझे व्हाट्सएप पर अपनी अपनी प्रोजेक्ट की पिक्चर्स के साथ वो हैंड रिटन लिख कर वो मेरे साथ शेयर करें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं, या अगर फॉर एग्जांपल अगर आप हैंड रिटन नहीं भी लिखना चाहते, पैराग्राफ की शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आप वो कर दें, तो मैं उसको एडिट करके आपको इम्प्रूव कर दूंगा, आप उस पर अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। तो साथ में आपको गाइड भी करूँगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं वाइवे में बात करूँ तो आप यू शुड बी एबल टू आंसर कॉन्फिडेंटली, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उस पर सर्च करें, गूगल करें, जैसे मर्जी उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, छोटी सी। ठीक है, वो ओपन एंडेड प्रॉब्लम है, आप किसी से मशवरा ले सकते हैं, अपने कोलीग से, यूट्यूब से, बुक से, कहीं से भी वो आपने उस चीज़ को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आप फ्राइडे से पहले पहले मेरे साथ ये फाइनलाइज करके तो मुझे शेयर करें।
जो कोई स्टूडेंट्स नहीं भी जिनके पास नेट है उनको कॉल करके उनको कह दें कि फ्राइडे से पहले पहले एक प्रोजेक्ट सर सबमिट करवाएं और सर से एडिट करवा के उसको फाइनलाइज करवा रहे हैं उस पर काम करें और उस पर काम करें और जल्दी से जल्दी ही हमें एग्ज़ाम से पहले पहले वो चीज़ ख़त्म करनी है। ठीक है, तो होपफुली आपको वो करके मज़ा भी आएगा और प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ होगी तो आपको सीखने को भी इंशाल्लाह मिलेगा। मैं आपको साथ साथ गाइड भी करूँगा। बेस्ट ऑफ लक।